पहले भी ज्वाइन करती रहती हैं. शी इज़ वेरी interactive and basically she is visual artist, so we can learn a lot of different things how she started and like that. And ma'am Fatma, she is Amen Arshad. She has interest in chef or pastry chef, basically internationally certified. But इसके अलावा she is very talkative in different shows and all that. She like to speak, so I hope it would be a good session. Oh, looking forward to it. Same here, same here. So So, a little जी जी जी. about myself. मैंने कहा चलो मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. I'm a certified pastry chef. I started from, I had this thing, a passion for cooking, baking always, but I never thought कि इसको मैं एक professional way में, कभी भी लेके आऊँगी. So I joined an institute in Lahore here, and then aista aista my interest kept on getting more and more. I inclined towards baking and all. फिर मैंने कुछ international certifications भी ली. And now I'm a menu developer and a recipe developer as well for some cafes and restaurants. And I also own my own cafe. It's a branch of Gloria Jeans, Laliti branch. That one. So yeah, my degrees have come in handy उस sense में बहुत. Charlene, that's wonderful. I mean, it's always good to pursue passion as a career, and nothing like when people start appreciating it. And that's when you realize that, it doesn't really hurt to make it into your bread and butter. If not bread and butter, then at least your pocket money. You know your self worth, right? So I think similarly, मेरा भी कुछ यही background रहा है, minus our age experiences. So I have been practicing fine arts for a very long time, and I graduated from a reputed institution in Karachi. And I think जब उस्ताद आपके अच्छे होते हैं, तो then they nurture those skills very well. So I had very fine female teachers, and of course there was a lot of support from home as well. So I continued my passion in fine arts, since the early 2000. उससे पहले ये था कि वो बस हो रहा था, क्लास में ड्राइंग कर ली और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड दिस एंड दैट. And then I was the student who was taken upon to the board कि आप ये draw कर दें और आप ये कर दें. Yeah, friends who are close to me were like, हाँ तुम drawing कर दो because you're so good at it. So it was always that. Everybody knew कि हाँ कोई ओकेजन आ रहा है तो क्लास में वो उस जमाने में कार्टून फिगर्स बहुत फेमस होते थे. गारफील्ड was my time. So कि हाँ वो कार्ड पे बना दिया ये कर. So it was always like that. So I always had a strong skill when it came to drawing. And then of course came my college, and then I met teachers, and I took it more seriously, and that never stopped actually. So from early 2000 till up till now, I moved to Norway about 7 years ago, and here I thought that आप जब एक दूसरे मुल्क में होते तो आप you have a responsibility. I think आप कहीं से भी belong करते हैं, you will be standing out. It's up to you how you want to stand out. So I chose this as I finally gave it a name as Rang. I made it digital as an art gallery. I started putting my work out. And I think जितना मैंने ferociously और aggressively मैंने इधर काम किया है इन 7 सालों में, and I started getting a lot of feedback in return. Not only as words of appreciation where my work started to float, but also in monetary benefits. And I realized, वो जो आपकी पहली चीज होती है, जो the first one. Of course, I have people still all around the world, friends and family who still have my work, but वो एक अलग किस्म का adrenaline rush होता है, if you put it that way. But then over here, when people who did not know me started showing interest in my work and started understanding what I'm doing and why I'm doing, उसमें फिर आपका एक अलग किस्म का आपको मजा आता है, Yeah. So my work is very my culture oriented. My work is very related to what my roots are, where I'm from, and so I
I take this as a pride of representing myself as a Pakistani. Yes. तो मुख्तसर कहानी ये है कि इतने अरसे में थोड़ा सा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी एग्जिबिट करने का मौका मिल गया, लोकल प्लेटफॉर्म्स में भी मिल गया, अम, लोगों ने ज़्यादा समझना और ख़रीदना शुरू कर दिया, लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, कॉन्वर्जेशंस डेवलप होना शुरू हो गई. तो आई थिंक वो सिलसिला फिर चलता रहा एंड देन आई थिंक नाउ आई थिंक देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट. सो या, Okay. So ओवर टू यू फरहान. you are continued with that. आपने या ये आई ऐसा विद दैट. जी बिल्कुल. और इसमें आपने कभी प्राइस को भी देखा है, गिफ्ट भी किया है? मैंने बहुत तोहफे दिए हैं, बहुत ज्यादा. फिर होता है कि आपके आसपास के लोग कहते हैं यू नो दिस इज, वो कहते हैं ना, आई थिंक एमन विल बी एबल टू रिलेट विद इट बेटर, कि समथिंग दैट यू कैन क्रिएट जी. एंड इफ इट्स गेटिंग अप्रिशिएटेड तो आप उसको let people appreciate by paying something out of it. And there are times when you want to, of course, because जो आपको जब आपका दिल चाह रहा होता है. मैंने पाकिस्तान एम्बेसी in Oslo, I have presented my painting to the former ambassador, and मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है, अपने शौक से दिया है, सो और जहाँ पे जो भी हुई, आपने प्राइस वाली बात जो की है फरहान, ये है कि obviously there is always a price attached to it, but there's always room for negotiation when somebody really wants your work. वहाँ पे फिर ये है कि you're like, I understand where this person is coming from and I don't want to be in that situation कि मुझे कोई चीज चाहिए लेकिन मैं afford नहीं कर पा रही, but I really want, and this is art. So of course, there is That's the beauty around. yeah. So yes, so that's what it is. जी एमन. So even in this case, many I started from home. I used to gift my friends, my mom's friends. My mom's a media person as well. She is an astrologer, NLP trainer. So thanks to her, मुझे बहुत एक थोड़ा सा edge मिल गया कि I used to present to different people in the media and all. So again, शुरू में यही था कि I was gifting people, people were appreciating me, and then slowly, when they saw कि अच्छा, this girl has something, Yeah. so the customers came in and so on. So how do you, ये आप मुझे बताओ, this is very interesting that you help restaurants or cafes to prepare a menu or prepare a recipe. I think this is very interesting. It's like same thing as putting colors together and then you coming up with a solution, right? Or you coming up with a piece of art. So yeah, how do you like, understanding and studying flavors and the food palette? ये भी एक बड़ी मजे की चीज है. It's all about experimenting. I'm experimenting different recipes day and night. I think ये मेरा शौक है. बहुत से लोग जो कि pastry chef बन जाते हैं और chef बन जाते हैं, they just stop there with their basic recipes, with the basic of everything. कि banana bread है तो वो ऐसे ही है, cupcakes है वो ऐसे ही है. So I am a bit different. मैं थोड़ी सी perfectionist हूँ. मुझे चाहिए कि मैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर, डिफरेंट रेसिपीज में इसके अंदर अगर ये डाल दिया तो कैसा होगा, इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, व्हाट विल हैपन, व्हाट्स द आउटकम, एंड दैट्स हाउ द न्यू रेसिपीज, द न्यू menus come out. And then of course कुछ फिर once you are a bit recognized यहाँ पे, तो फिर different cafes के जो owners होते हैं, restaurants के owners होते हैं, they come out to you and like कि हम अपना एक नया menu plan कर रहे हैं for maybe a specific season, for maybe a specific event or something, and then they fresh ideas, new ideas, क्योंकि उनके पास already बहुत great chefs तो होते हैं, but then newer ideas, newer recipes. So and even like seasonal wise भी, sorry I'm cutting you, seasonal wise भी जो चीज available होती है, I think that is so important, right? Like when you're coming up with a recipe or when you are following a recipe, you do always infuse your own flavors in it and you try to create a fusion. And I think जितने मजे का fusion खाना होता है, हर चीज का fusion बहुत मजे का होता है, Chinese food for instance.
ऑथेंटिक चाइनीज खाना हम शायद नहीं सोच सकते. वेरी फ्यू पीपल आर एबल जी टू जी जी अंडरस्टैंड जी जी अंडरस्टैंड कि वो कितने कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स होते हैं. ये बट a true fan of authentic cuisines. ठीक है, ये जो mixed cuisines होती हैं मुझे personally इतनी पसंद नहीं है. मुझे यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारा concept हम थोड़ा सा देसी टच ऐड कर ही देते हैं कहीं ना कहीं मिर्चें हैं, everywhere. लाल वाली हरी वाली मिर्च. So but एक उनका टेस्ट होता है once your palate agrees with it, with those tastes, those combinations, those flavors, they are such exotic flavors कि बिल्कुल. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. मैं कोशिश करती हूँ फैमिली को एक्सप्लेन करूँ कि ये ट्राई करें, वो ट्राई करें, बट नॉट फॉर देम. ना. सो आई वांट टू आस्क कि अब आप जो ग्लोरिया का जिक्र किया तो से ये एक्चुअली पूरी चेन में आप उसको डील कर रही हैं या आप एक अपना आइटम पेश कर रही हैं, क्या कर रही हैं उसमें? मैं सिर्फ एक ब्रांच करती हूँ, अच्छा विच इज द लाली जी चौक जी जी ब्रांच. इट्स और वहाँ पे we already have great chefs over there, but yeah, I'm helping. I'm always introducing new desserts, new recipes. अपने जो experiments होते हैं पहले मैं वहाँ पे लेके आती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे successful हैं, and then further I reach out to more people and people reach out to me for those things. सो यानी आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करती हैं, अगर वो पसंद आए तो फिर आगे जाता है. Obviously, अगर मुझे पसंद नहीं आएगा, मेरे कुछ staff को पसंद नहीं आएगा, I always have this panel of people, my friends, family, a few good chefs, friends. Hey, is this worth it? What I have created, is this going to sell in the market? Is it going to be good? Is it something different? Then again, I pursue with it. वरना तो फिर हाँ हाँ बिल्कुल वो नहीं. वो हमेशा होता है कि किसी जगह की ब्राउनी अच्छी है तो जी किसी जगह या की रोटी ज्यादा अच्छी है, या कहीं की फ्रॉस्टिंग जो है वो बहुत मीठी है तो कहीं की. वी ऑलवेज हैव, हमारे यहाँ होता है. आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर कि आपको एक जगह का सब कुछ शायद ना अच्छा लगे, एंड देन यू फाइंड आउट कि अच्छा हैव यू चेंज योर शेफ और समथिंग, एक कॉन्वर्सेशन निकल कर आती है. एंड देन दे से कि यस यू नो दिस सीजन वी आर कीपिंग दैट पर्सन्स food items or dessert items or gelatos or anything you may name it. So ये भी एक, I think it's a good trend. इट इज. अब तो जिस तरह आपने स्ट्रेंथ की बात की, अब तो क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ, आई कैन स्पीक फॉर लाहौर. यहाँ पे तो अब कुछ इस तरह की जगह खुल चुकी हैं जहाँ पे जो होम बेस्ड बेकर्स हैं वो अपनी चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देन की चीजें अच्छी बिक रही हैं, लोग को पसंद आ रही हैं, वापस डिमांड में आ रही हैं. आई थिंक अब तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर शेफ्स और फील्ड. वरना तो आज से कुछ साल पहले जिस तरह हम मसाला टीवी पे और इन चैनल्स हमारे लिए होता था शेफ्स और culinary रेसिपीज ये वो सब कुछ, अब तो इट्स ऑल कमिंग टुगेदर इन अ गुड वे, इन अ नाइसर वे. ओके ओके. एंड इफ द योर आइटम इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड तो फिर आप उसको बाकी ब्रांचेस में भेजती हैं? अगर बाकी ब्रांचेस मुझसे डिमांड करेंगी तो आई अच्छा सेंड देम. ओके, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू विल सेंड देम. No, not at all. Every branch has their own chefs and their own work environment, whatever they want. But if they want something that I'm creating, that something is at my branch, they will definitely ask for the supply for those things. ओके ओके, बिकॉज यूजुअली ये होता है कि जो चेन्स होती हैं उनमें एक चीज स्टैंडर्ड हर चेन पे अवेलेबल, हर ब्रांच पे अवेलेबल होती है. आई थिंक एमन और मेरे काम में शायद, सॉरी, ये फर्क है कि एमन अपने काम का एक सैंपल प्रोवाइड कर सकती है, मैं शायद अपने काम का एक सैंपल नहीं प्रोवाइड कर सकती. शायद डिफरेंस ये है खाने में और कपड़ों में और या Create, and that's beautiful, and that's worth. And वो देख जो आप बनाते हैं, saw your page before this session, and अमेजिंग, बहुत यूनिक चीज है. And जैसे आपने कहा कि आप अपने कल्चरल रूट्स से कनेक्टेड रहते हो, एंड आई कैन सी दैट इन योर थिंग्स. या थैंक यू. So okay, I mean come to the topic like growth of women. हमारा इस आज का तो छोटा सा मौजू है. So what you feel to like कि आप क्या बताना चाहेंगी कि आपके नज़दीक वुमेन की जो ग्रोथ है इन प्रोफेशनल, इन पर्सनल, पर्सनालिटी बिल्डिंग एंड ऑल दैट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू अडल्ट लाइफ,
बट द कोर पर्सपेक्टिव यू लाइक हमें अपनी फीमेल्स में वो चीज़ें ज़रूर पैदा करनी चाहिए। डेफिनेटली पैदा करनी चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल दे सकती हूँ। आई वुड शेयर a personal story. I'm raised by a single mother, so my mom has always taught me कि you need to be someone of your own. You need to be your own person. जिस तरह के usually लोग अक्सर हमारे यहाँ लोग सिखाते हैं कि आप इस एज तक पढ़ें, फिर उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने नए घर की हैं, ये हैं, वो हैं। आई हैव बीन टॉट ऑपोजिट थिंग्स। आई हैव बीन टॉट हाउ टू बी माई ओन पर्सन। मुझे ये फ्रीडम दी गई है और ये बहुत कम लोगों को ये फ्रीडम मिलती है। एंड आई रियली होप कि जो हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं इनका ये माइंडसेट चेंज हो कि वो अपनी बेटियों को फ्रीडम दें, ट्रस्ट करें उन पे कि वो जब बाहर जा रही हैं अर्न करने के लिए तो वो आपकी ही इज्जत बनाएंगी। वो आपके लिए ही एक इज्जत होगी कि आपकी बेटी इस काबिल है कि वो कुछ कर रही है इन लाइफ। And it's not necessary ke, and I truly believe ke even when two people get married, a girl should be financially independent, कि उसको अपने छोटे डेली टू डेली चीज़ों के लिए किसी पे रिलाई ना करना पड़े। बिकॉज इन्हीं बातों से आपको पता है फिर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती हैं और चीज़ें स्टार्ट होती हैं। नेसेसरी कि आप इंडिपेंडेंट हो, टू बी योर ओन पर्सन। ओके। और जो इसमें इंडिपेंडेंस के और ग्रोथ के वाले से बात है कि जो हमारे यहाँ एक इम्पोजिशन भी होती है पेरेंट्स की, लाइक इफ आई गिव एग्जांपल कि आपकी अगर मदर ने इंसिस्ट नहीं किया, बट देयर आर नंबर ऑफ पेरेंट्स आई हैव यूज्ड डाटा कि वो इम्पोज करते हैं कि नहीं यू हैव टू डू दिस एंड नो, बट उसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल पेरेंट्स करते हैं। मे बी मेरी भी वालदा ने कुछ अर्से तक इस वजह से कुछ इम्पोज किया हो कि तुम फर्दर स्टडीज को करो, ये करो। बट देन व्हेन शी लर्न कि दिस इज व्हाट माय पैशन इज एंड मैं एक स्किल है मेरे में जिसको मैं परस्यू करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। मगर जिस तरह से और पेरेंट्स होते हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि खाली ये डिग्रीज, पेपर्स, पढ़ाई ये सब करके भी लोग इतना नहीं कमा पाते, इतना नहीं सक्सीड कर पाते इन लाइफ जब तक आपके पास कोई स्किल ना हो, जब तक आपके पेरेंट्स का ट्रस्ट ना हो, जब तक पेरेंट्स पुश नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया आपको एक अच्छे पर्सपेक्टिव में देखेगी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ये एक बहुत बड़ा तारुफ है कि आप एक फैमिली से बिलोंग करते हो, अच्छी फैमिली दैट सपोर्ट्स यू, दैट सपोर्ट्स व्हाट यू डू। Or what about your father? He also like your work? As I said, I'm raised by a single mother, so sorry, I did not listen that. और उसके बाद आपने जब ये सारा कर लिया एंड आपने अपनी ये एक किस्म का ब्रांड ही आपने बना लिया, अब इस लेवल पे आप इसको क्या चाहती हैं कि हाउ यू फील योर लाइफ एज अ ग्रोइंग वुमेन, कैसे आप देखती हैं? यू आर सक्सेसफुल? आई थिंक नहीं, अभी मैं सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं अपने आप को देखती, बिल्कुल भी नहीं। अभी दिस इज जस्ट स्टार्ट फॉर मी। ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आई वांट टू गो वे 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 फर्दर। ठीक है, अभी वो लंबा रास्ता है। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे फॉर मी, बट ये बिल्कुल एक स्टार्ट है। और आई एम 23 एट द मोमेंट, तो मैं तो कहती हूँ कि दिस इज जस्ट स्टार्ट फॉर मी और अभी मैंने बहुत कुछ करना है। एट दिस पॉइंट पीपल आर लाइक अच्छा फाइन, आपने स्किल इनहेरिट कर लिया है, आप कुछ कर रहे हो, दिस इज इट, इसी से करो, इसी से कमाओ, इसी से खाओ, इसी से घर का चलाओ। बट मुझे तो अभी अपनी आर्टिस्ट्री का जो एक वर्ल्ड है, मुझे अभी इसे और एक्सप्लोर करना है, मुझे अभी और है, मुझे और I want to see life. I want to experience different cuisines. That's what I want to do. I want to create more things. So I think it's a never-ending journey for me. Okay. So, Ma'am Fatma, what is growth in your opinion? आई थिंक ग्रोथ बहुत वेरी करती है हर इंडिविजुअल के ऊपर, जैसे सक्सेस करती है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस एक बड़ी और ग्रोथ एक बड़ी मॉनेटरी टर्म होती है, कुछ लोगों के लिए एक बड़ी पर्सनल बड़ी
कंटेनमेंट वाली अनस्पिरिचुअली होती है. सो आई रियली फील देयर इज नो एज लिमिट टू इट. अगर हम ये किसी पर्टिकुलरली जेंडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा सबको साथ लेके, शायद थोड़ी मेरी फितरत ऐसी है कि आई ऑलवेज टेक ऑल द जेंडर्स टुगेदर. आई बिलीव अगर इक्वालिटी की बात करनी है तो फिर इस तरीके से, क्योंकि मुझे हमेशा वो एक सपोर्ट मिला है from my father, from my husband, and now my son, who's not even 10 yet. But you know, एक आपके घर में है कि ठीक है, this is my work and this is what I do. However, um, very important to teach a skill. I completely agree with him on that, and very important to identify that skill in a child from an early age. Because I'm a mother, I see my son with changing habits and changing, interests every other day. तो वो भी एक होता है कि आपको आइडेंटिफाई आप एज अ पेरेंट कर लेते हैं कि वो मैथ में ज्यादा अच्छा है, या वो आउटडोर में ज्यादा अच्छा है, या इसको बैठ के चीज देखने का ज्यादा शौक है, और इज ही मोर एक्सप्रेसिव, इज ही गोइंग टू बी इन परफॉर्मिंग आर्ट्स. सो इम्पोज शायद ना करें, लेकिन मैं उनसे भी डिसएग्री नहीं करती जो पेरेंट्स इम्पोज करते हैं, क्योंकि उसका पेरेंट माइंडसेट होता है. ठीक है, आप कुछ पेरेंट्स जो है मेहनत करके इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के अंदर, डॉक्टर बनना है, बिकॉज वी सी वेयर द फ्यूचर इज गोइंग, राइट. However, growth is a very fluid, I feel it's a very fluid term, and I feel age कोई limit नहीं है. आप कोई भी चीज अगर हासिल करनी है, I'm 40, so like I said, I'm there is no limit to it, and have always been an artist, but I've been a teacher, I've been an HR consultant, I have practiced different professions as well, and बट एक वो क्योंकि हाथ में एक हुनर है जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, तो वो कभी जाया नहीं होता. तो वेदर और नॉट आप उस चीज को अपने प्रोफेशन में आप उसको प्रोफेशनली परसू करें, आप उससे पैसे कमाएं, लेकिन आपके साथ वो एक स्किल रहेगा. आप बेशक एक डॉक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छी है, वो कभी ना कहीं आप उसको लेके चलें, बिकॉज यू नेवर नो, अगर आपको उसमें मजा आने लग गया एंड आपको अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गई. मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बहुत सारा एक जो टैलेंट है वो जाया कर रहे होते हैं. हाँ जी, यही And उसमें लोग क्या कहेंगे, और उसमें मर्द औरत का कोई फोन नहीं होता, बट टैलेंट मुझे लगता है जाया होता नहीं है. इट्स रियली हाउ यू लुक एट इट. So, and if anybody has a talent, then मैं ढोलक बहुत अच्छा बजाती हूँ. This is my talent, और मैं पिछले कोई 25 सालों से बजा रही हूँ, because that's also a skill. तो कोई शायद मैंने फैमिली किया, अपने फ्रेंड्स की मैंने कोई शादी की, मुझे मौका, मुझे ढोलक नजर आ जाए, एंड आई एम लाइक, मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन है, बट ये मुझे आता है बजाना, एंड आई नो आई एम वेरी गुड एट इट. सो ये वो वाली चीजें, अगर आप उस मोमेंट में यू लिव इन दैट मोमेंट एंड यू एंजॉय दैट मोमेंट, तो आई थिंक आपके बाकी 5 दिन जो बड़े अच्छे गुजरते कि ओ मैंने इतने सालों के बाद ढोलक बजाया, एंड आई एम स्टिल वेरी गुड एट इट. So this is how I look at things. इट्स अमेजिंग. मुझे भी ये आज पता चला, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी वर्सटाइल चीजों में भी रही हुई है. सो इस चीज का शौक है. अगर आवाज अच्छी होती तो शायद मैं गाना भी सीख लेती. अल्लाह मियां ने मुझे दी नहीं. नहीं, आवाज भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है. सो मैं आपके जैसे आपने चाइल्ड की एग्जांपल दी, सो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर आवर मदर एज वेल व्हेन दे विल लुक आवर सम ऑफ द मैसेज कि कुछ बच्चे होते हैं जिनमें आप कंसिस्टेंसी नहीं देखते. लाइक अगर आपने जैसे कहा कि अगर ही गुड इन मैथमेटिक्स और ही इज गुड इन सम अदर सब्जेक्ट, सो अगर वो वेरी कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या करें पेरेंट्स? वक्त के साथ उसको वो भी समझ आ जाएगा. आजकल दुनिया इतनी फास्ट पेस चल रही है. हम सिर्फ बाहर के ममालिक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ परदेश की और विलायत की बात नहीं कर रहे, हम लोकली भी बात कर रहे हैं. आजकल इतनी फास्ट पेस दुनिया चल रही है कि बच्चे को उसके साथ चलने दें आप, with few restrictions, with few limitations, keep a watch on them, बट आई थिंक उसको चलने दें. उसको वक्त के साथ खुद ही समझ आ जाएगा. स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी आगे जाएगा या जाएगी, वो खुद ही उसको समझ आ जाएगा कि नो, दिस इज व्हाट माय लाइन शुड बी. सो आई थिंक इतना आपको इन 2022 आई थिंक एक पढ़े लिखे माँ बाप जिन्होंने खुद एक तमीज की जिंदगी गुजारी है, जिनके अपने माँ बाप ने शायद उनको इतना लीवे दिया था,
तो आई थिंक इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी नेक्स्ट हम्म, जनरेशन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सो एमन, व्हाट यू फील कि हमारे इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं और जिस तरह आप अब कर रही हैं, लाइक वन डे यू विल बिकम अ ट्रेनर एज वेल इंशाल्लाह। सो हाउ यू फील कि आप इस करिश को कैसे देखती हैं कि अगर आपके पास इस तरह के यंगस्टर्स आए, सो व्हाट यू विल फील टू डू दैट? I think that's one of my goals in life. हम्म। At least किसी को कर पाऊँ, ज़्यादा मे बी, इंशाल्लाह ज़्यादा लोग, बट किसी को तो इंस्पायर स्टोरी से। स्टिल मैं कुछ क्लासेस भी देती हूँ। आई एम अ पेस्ट्री इंस्ट्रक्टर वेल, सो यंग बॉयज इवन काम मेरी क्लासेस में आती। तो अब फिर मैंने फोकस किया ऑन ब्रिंगिंग सम बॉयज इन एज वेल, ताकि बिकॉज हमारे घर में हमेशा बताया जाता है कि अ वुमन शुड बी इन द किचन एंड स्टफ लाइक दैट, और बहुत में भी इंटरेस्ट होता है to bake, to cook, and there are many prominent names in our field. So it would be great अगर मैं कभी किसी को inspire कर पाऊँ with my story in life. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यू विल इंस्पायर देम। एंड करंटली सोरा साहब शेयर कर दीजिएगा कि व्हाट आर योर करंट गोल्स, लाइक इसको आप सिर्फ इसी पे रहना है, या लाइक यू मेंशन कि आपने एक्सप्लोर करना है अभी चीज़ों को, आप डिफरेंट फील्ड में भी जा सकती हैं। नहीं नहीं, this is not my वो this is my current goal. I have other goals as well. Uh, I want to explore a lot of things. I'm a bit into digital marketing as well. I'm into interior as well. I want to explore everything. I want to learn. I have this thing of learning new things and then seeing कि मैं मे बी कहाँ मज़ीद फिट इन कर सकती हूँ, कहाँ नहीं कर सकती। आई लाइक टू लर्न अ लॉट। सो मेरे लिए कोई एक end नहीं है। हाँ, एक और है, I have to travel a lot and I have been traveling a lot since childhood. So I wanna carry on with that as well. और जैसे जैसे I keep on traveling different countries, तो वहाँ पे भी get inspired by people. I like to just be in the public, see लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी क्या बात करना कल्चरल लोग। इनसेस क्या है? Exactly. Yes. So I have a lot of goals and inshallah ये एक वो particular नहीं है कि मैंने इसी चीज में रहना है, Okay. um, and many other things. Okay, traveling is also my hobby. I also like to interact, explore cultural कि हम कैसे अपना उनको एक्सचेंज कर सकते हैं और उनसे क्या सीख सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। लाइक मैम ने भी मेंशन किया कि वो भी ओस्लो में बहुत सारी चीज़ें देखती होंगी और उसके अलावा भी डिफरेंट जगहों पे भी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी आपका गुड। लोगों से बात करके बहुत एक जो आपका विजन होता है, बच्चे से एक माइंड सेट होता है। जब आप डिफरेंट ममालिक के लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो आपका क्लियर होता है कि दुनिया में ये भी होता है, दुनिया में वो भी होता है, इस तरह के लोग भी हैं, उस तरह के लोग भी हैं। सो इट्स ऑल a good thing in the end. Inshallah, inshallah. So I think this was a good conversation, और basically हमारा जो topic है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, if we like to add some kind of personality incidences and all that. मैं conclude करना चाहूँगा मैम फातिमा, लाइक हमारे एक जनरल कॉन्सेप्ट में ग्रोथ ऑफ वुमेन को लिया जाता है सम ऑफ दी कैटेगोरिकली, लाइक इफ सम है गुड बैकग्राउंड तो हम उसको कहते हैं कि ये एक हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खास तौर पे क्लास सिस्टम आप कह लें कि हाँ ये उस कैटेगरी से हैं, ये उस कैटेगरी से हैं। सो हाउ टू बैलेंस आवर दीज थिंग्स, अपनी वैल्यूज़ को लेके हम ये कहें कि अगर एक रूरल एरिया से लड़की है और हमने उसको भी उसी तरह रखना है जैसे एक हमारी फॉरवर्ड लेवल की अगर हमारी किसी कोई पढ़ी हुई है, तो ये मेरे ख्याल में डिफरेंसेस ख़त्म होने चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक ये तो फिर आपकी अपनी सोच और अपनी अपब्रिंगिंग के ऊपर है। मुझे जो हमेशा एक चीज़ से मसला रहा है वो ये है कि आपने अगर किसी की मदद करनी है तो आप उसको पब्लिसाइज ना करें, आप उसको स्किल सिखा दें या आप उसको इतना मदद कर दें लोगों को नुमाइश लगाए बगैर कि जी कैमरा घर पे छोड़ के जाएं और आप वो
अपना मामला अल्लाह पे छोड़ें और उसके साथ करें, बिकॉज आपको अल्लाह मियाँ ने इतना इतना प्रिविलेज्ड बनाया है, राइट? तो मुझे हमेशा जोर, चीखम पुकार और नॉइस करने वाले लोगों से मुझे हमेशा से एक मसला रहा है। आपने किसी किसी के साथ आपने अच्छाई करनी है तो आप उसको अच्छी तरीके से करें, जताएं नहीं। आप उसको एक एहसान ना बना लें, और आप उस चीज का फिर जितना कर सकते हैं, आपको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी आप करें। तो आई थिंक ये डिफरेंसेस उसी वक्त खत्म होना शुरू हो जाएंगे जब आप एक अपने से कम प्रिविलेज वाले को भी उतने ही एहतराम से आप ट्रीट करेंगे जितना आप अपने से ज्यादा प्रिविलेज इंसान को। क्योंकि मुझे ये लगता है जो जमाना जहां जा रहा है, आई होप जो हमारे बाद की जनरेशन है वो इस चीज को इलिमिनेट करे अपनी जिंदगियों से, अपने मुआशरे से। क्योंकि हम हमेशा तरक्की को वो समझते हैं जो ज्यादा पैसे बनाता है या बनाती है। इट इज नॉट, मेरे नजरिए में शायद ये चीज थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यस, पैसा आपकी जिंदगी में जरूरी है, तरक्की आपकी जिंदगी में जरूरी है, लेकिन आप फिर इंसान रहें, आप इंसानियत को साथ साथ लेके चलें। तो आई थिंक बैलेंस आउट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन उससे फिर आपकी अपनी अपब्रिंगिंग बहुत आती है। आप उस चीज को किस तरह लेके चलते हैं। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर हाउस हेल्प, हमारे घर। जो अगर आप इस चीज को ये समझ लें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि आपके घर जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प आपकी मदद करने आ रही है, पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट को समझें कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। हम उनकी मदद उसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिए नोट है, राइट? आई एम गोना मेक इट साउंड लाइक दैट। वो एक्चुअली अगर वो लोग ना होते तो हमें खुद वही काम करने पड़ते जो हम बाहर के मुल्कों में कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े, बाहर का रनिंग अराउंड। और हम अपने मुल्क आके जहां हमें इंसान बन के रहना चाहिए, वहां हम ऐसे अपने आप को समझने लग जाते हैं कि जी हम डेरोगेटरी टर्म्स यूज करना शुरू कर देते हैं। हम वो तमीज भूल जाते हैं वहां पे कि एक बच्चा जो है एक अपने से बड़ी उम्र के इंसान को, वो बेशक वो 10 साल बड़ा है, वो 15 साल बड़ा है, कि वो भाई और बाजी और आपा या कुछ कहना है कि नहीं कहना उसके आगे। तो आई थिंक ये वही बेसिक्स हैं जो आप अपने घरों में सीखते हैं, आप और आप उन वैल्यूज को लेके चलते हैं। आप वो डिफरेंसेस हटा देंगे तो आई थिंक बाकी बहुत चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। ग्रोथ आपकी, आप दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ के तो देखें। आप जो आप खुद खा रहे हैं आप दूसरे को खिला के तो देखें। तो इंसानियत जब बदल जाएगी, आपकी फितरत बदल जाएगी, तो और भी बड़ा कुछ बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। सो और मुझे ये लगता मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पे ज़रूरत है। मैं ऑलवेज कहता हूँ प्रोग्राम में, वो पेशेंस एंड टॉलरेंस वो बहुत होनी चाहिए कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करने के लिए। जो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि जो मतलब मेरे बाद की जो यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत कम हो चुकी है ये चीज़ कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट। हमें इस पर भी बहुत काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। So Amen, anything you would like to add, please? Yeah, definitely. I think कि जो आपने platform provide किया हुआ है to speak open opinions about the ongoing issues, especially when it comes to women, even men. It's a pretty great platform, and I'm so glad कि इस तरह के platform आजकल आ रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसे आप इतना openly अपना opinion का इजहार नहीं कर सकते थे a few words में, and this is a great thing that you're doing. Yeah, because And Fatma, please. meeting you and No, absolutely. I think this is an absolutely, putting people together. And आप जो कर रहे हैं फरहान, absolutely, you're bringing so many people together, and we are getting to know each other. There are so many people who think alike, and especially there's so many women on this platform. अब तो शायद ये मेरी तीसरी दफा मैं इनके साथ सेशन कर रही हूँ। चौथा है? अच्छा, सॉरी, आई फॉरगॉट। तो अब वो होने लग गया है, तो आई रियली एंजॉय बिकॉज आई लुक फॉरवर्ड टू कि अब मेरी किन से मुलाकात होगी, एंड इट ऑल्सो गिव्स अस दैट बूस्ट कि अच्छा, we love your work, and I also want to give you that thumbs up on social media. Why not spread the word around if I can, because I know so many people in Lahore, and I know so many people who keep going to Lahore, and why not spread the word? And if somebody is doing so good, और अगर कोई नहीं भी अच्छा काम कर रहा तो वो words of
not that I'm putting it that way, but आप एक अच्छे अल्फाज के साथ आप किसी को अप्रिशिएट कर लें तो क्या जा रहा है किसी का, मुस्कुरा लें किसी के साथ आप, you're getting to know people, because दुनिया इतनी छोटी सी है कि inshallah if Eamon gets to come to Oslo and we end up meeting up, हमें नहीं पता where it's going to go, but of course you know somebody in Oslo now, so या आप नॉर्वे में कहीं जा रही हो travel, you can always ask me and if I'm able to help. So I think it's just about increasing your network, and आप अगर किसी के किसी तरीके से काम आ सकते हैं, वो एक सदके जारिया के थ्रू क्यों ना हो, व्हाई नॉट. सो या एग्जैक्टली बस इस पे ये जो है आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, मैं अमूमन बहुत कम शेयर करता हूँ। सो ये जो मेरा पर्पस था वो यही था कि मुझे यही था कि कोई भी ना सुने, एटलीस्ट व्हाट आई बिलीव कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जब आप कुछ कहते हैं अच्छा, तो और नहीं तो वो फरिश्ते ही सुन लेते हैं और वो अच्छी बात कहीं ना कहीं आपकी जो सर्कुलेट हो जाती है. सो थैंक यू बिल्कुल. सो मच फॉर योर वर्ड्स, ऑल्सो थैंक यू थैंक सो यू. मच फॉर एमन, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऑल्सो आई वुड गिव यू, इंशाल्लाह नई पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे. एंड वन लास्ट मैसेज फ्रॉम अमन, एमन प्लीज आपकी तरफ से. One last message. If you have any skill, anything in your heart, आप गाना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो, पे करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जस्ट डू इट. अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं उनको ज़िंदगी से थोड़ा सा एलिमिनेट करके अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो. हम हमेशा दूसरों की करने में लगते हैं, विच इज़ गुड थिंग, करनी चाहिए, लेकिन सेल्फ लव भी कोई चीज़ होती है. एंड आई बिलीव कि जब तक आप अपने आप को नहीं प्यार करोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, आप दुनिया को और दूसरों को कैसे प्यार करोगे और कैसे समझोगे. जबरदस्त. एब्सोल्युटली. स्प्रेड लव एंड पीस ऑलवेज. थैंक यू सो मच. एमन अरशद हमारे साथ थी, मिस फातिमा खान शमसी हमारे साथ थी. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर डाइवर्सिफाइड टॉपिक एज वेल. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.